Hi everyone, today I talk about these videos and you are very happy and we are excited. Today I talk about all of the ladies and gentlemen. Today this video are discussing and we are very happy and we are very excited. Today I talk about these videos how do you learn English for me. मैंने अपने इंग्लिश को कैसे सीखा. मैंने अपने इंग्लिश को एक अपने प्रैक्टिस से सीखा. इट मीन्स जस्ट लाइक अ प्रैक्टिसेस. मैंने अपने स्कूल के अपने टीचरों से सीखा. मैंने एक हमारे सर थे उनके साथ मैंने कोचिंग किया. जस्ट लाइक आई लर्न इंग्लिश for Alice Alliance Language Academy. Just like we are the given in directions of speaking, and they are the given directions. Then I follow these directions. Could I start the practice just like a practices? Then I will speak in English or when. So all of the questions भी are just like your practices. मैं जब practice करता हूँ अपने कोशिश करता हूँ कि with अपने fluently उसके साथ ही fluentness लाता रहूँ. It means that for the times or things or minds can I speak in English or those words then I mix other fluentnesses also. मैं अपने कोशिश करता हूँ कि हर एक वर्ड्स को जो स्पीक करूँ हर एक वर्ड में मेरी अपने फ्लुएंटनेस हो अपनी जुड़ाहट हो. ये नहीं कि मैं किसी को अपने फ़ोन से नहीं देखता हूँ कि मेरा जस्ट लाइक दिस टाइप्स ऑफ फ्लुएंटनेस फॉर मी. मैं इंग्लिश का वीडियोस देखता हूँ इंग्लिश का सब चीज़ देखता हूँ इंग्लिश में सोचता आई थिंक्स अबाउट आवर इंग्लिश. Just like this types or you are practices then I will practice then you could I speak in English. And आप भी practice करेंगे just like a practice also time of practice is just at the homes at the times and even time to exteriors and just you start for the practices in these types or practices. आपको किस प्रकार उस समय practice करना होगा. प्रैक्टिस जस्ट लाइक आपका होना चाहिए फ्रंट ऑफ मिरर के सामने एंड या किसी के सामने भी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. यू थिंक्स योर आपको उस समय सोचना होगा माई थाउजेंड्स ऑफ पीपल 1 करोड़ ऑफ पीपल्स देन आई स्टार्ट द प्रैक्टिस. आपको समय सोचना होगा कि मैं इतने सामने पीपल के सामने बोल रहा हूँ माई प्रेजेंटेशंस क्या होगी. That is what is my presentations or the 1,000 of people speak in English. Just like आपको उस समय थिंकिंग आपको सोचना होगा just like at the small students just like a big students that is it doesn't matter. आपको अपनी तैयारियों को करना स्टार्ट कर देना होगा क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है जो कि समय बीत जाता है तो समय वापस नहीं आता है. जस्ट लाइक नेक्स्ट टाइम्स जो समय बीत जाता है आप सोचते हैं जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश जब छोटे छोटे आपके सामने बच्चे इंग्लिश बोलेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं भी इंग्लिश बोलता तो अच्छा होता. इट मीन्स दैट जस्ट लाइक दिस टाइम ऑफ प्रैक्टिसेस. वो समय प्रैक्टिस कर रहे हैं जब वो बोलेंगे तो आपको क्या होगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ट्राई करूँ. जस्ट लाइक थिंग्स आर नाइस क्राई स्पीक इंग्लिश दिस टाइम्स just like you start in the practices. It means that or that times or the also time no anyone pressures and I just like speaking or the practices and we are taught to our person to our English. Could I try to speak in English or the schools? Could I try to talk to our English my teachers? Then I learn English. You could try to speaking times or person to meet facts and after that then you talk to our English. आप किसी भी पर्सन से मिलिए कोशिश करिए कि अपने इंग्लिश में ही बात करिए. जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम यू स्पीक इन इंग्लिश दैट you understand or wells then you could not understand or wells then you use or your मदर लैंग्वेज. आप उस पहले तो आप किसी कहीं पे जाइए तो यूज करिए कोशिश करिए दैट्स आवर इन्वॉल्वमेंट्स एंड देयर फ्रेंड पीपल्स आर अंडरस्टैंड आवर इंग्लिश और नॉट. Could you try then process or things your minds then that is our variables and our practice just like your practices and the front of peoples and front of persons that times or feel your variables. उस समय आपको क्या लगेगा अच्छा लगेगा मैं किसी के सामने कन्वर्सेशन कर रहा हूँ. Just like should things your minds could I speak in English or the front of peoples in these types or speaking. That's why your development on the speaking skills. That time you're speaking skills then you confidently speak and without hesitations. You don't think your minds I have a hesitates. I have a not hesitates. You could use start on the practices. Just like you practice जिस प्रकार का practice करते जाएंगे आपका hesitation दूर हो जाएगा confidence level high हो जाएगा develop on the skills not of skills and your the body language or changes there. First of all you gain the knowledges. You should know you don't scatter the knowledges you could not learn that and after that we earn the maximum or do that. You should practice on the front of peoples and talk about your English. You could not talk about your English that's just like you don't think your minds I belong to here, I belong to here is not environments or goods. Then how will you learn English?
आप ये मत सोचिए कि मेरा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, यू मेक इन एनवायरमेंट्स, आप एनवायरमेंट्स को बनाइए, इंटरनल एनवायरमेंट्स बनाइए, आउट एनवायरमेंट्स नहीं बनना है, आपके माहौल नहीं बनना है, then your minds are internal environments. You just like imagine in the internal environments. You put your things, your minds also turn by English. Then we want to be speak that front of people, that times are feel our very well, and you will try to speak things. You will not try to speak is how we want to be our good persons and good personality. That times are you speaking English for the peoples. That times are your personalities are going on downwards. So just like you develop the personality, then you can learn English, and we are carrying on the subject capabilities or the well and use type, and you can express our words or words. So do you used to practice this? I have a lot of practice in this type of learning my journey of learning English 10 times, and before of them then after times and could I speak in English or they are advanced level speaking. So that's all for now. Thank you very much.